हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि टाइम आउट नोटिफिकेशन नोट कैसे काम करता है और हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखने वाले हैं टाइम आउट कंट्रोल नोट। तो हमने जैसे बताया था कि टाइम आउट नोटिफिकेशन नोट में क्या होता है कि हमने एक कर दिया कि 24 आवर में ये रन होने वाला है, बट इन केस 24 आवर उस टाइम में कुछ इशू होता है, देन फ्लो का टाइमिंग बिगड़ सकता है और मेरा फ्लो 11:30 के नाम करो के किसी और टाइम ट्रिगर होगा, फिर अगेन नेक्स्ट डे में 24 11 मान लो कि 33 में ट्रिगर हुआ, फिर यदि अगला दिन कुछ हो गया, दिन 11:40 में ट्रिगर हुआ, तो इस तरह से क्या होगा, वी कैन नॉट फिक्स द टाइमिंग कब हम फ्लो को ट्रिगर होना है। ठीक है? इसके लिए हमको हमको अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरा फ्लो जो है डेली 11:30 पे ट्रिगर हो, चाहे 12 बजे ट्रिगर हो, देन तो क्या करना होगा हमको, जो है टाइम आउट कंट्रोल नोड पिक्चर में आता है। तो टाइम आउट कंट्रोल नोड बेसिकली हेल्प अस टू टाइमिंग ऑफ द और fix the timing or control the timing of the timeout notification. Okay, the the timeout control node basically controls the timeout notification node, uh, triggering, or you can say that like that. Okay, so basically we need to design the flow and see how it's working. Okay, so let me remove this breakpoint. I need this also. Don't need to worry. I need the timeout control node. Let me put here. Okay, now I need the timeout notification node also, and I need one more I will tell you what I am doing. Don't need to worry about that. Okay. Now let me connect those, and let me connect this. Okay. Now let me explain you. This flow will be trigger on an interval of 24 hours, right? So now it is 11:36. It trigger again on the 11:36 on the next day. Okay. Now what will happen? This will be triggered. Okay. Now, but here we will set some timing. Let me just one thing. Just give the and let me here keep. Okay, before that let me do some. Let me show you one thing. Do here. This- I want to do something. Okay, recording problem because oh, let me first do explain this to you. That we will do here than one code. Basically, in the timeout node, here there is a unique identifier, and if you also timeout notification node, there you can see also there unique identifier. Okay, so what will we do as soon as this flow will be triggered, this will come to here, and timeout control will control the timing of the this flow to be trigger. Okay, तो ये फ्लो कब ट्रिगर करना है, ये जो है टाइम आउट कंट्रोल नोड डिसाइड करेगा। तो टाइम आउट कंट्रोल नोड बेसिकली कंट्रोल द नेक्स्ट टाइम आउट नोटिफिकेशन नोड व्हेन टू बी ट्रिगर। ओके, तो हम लोग इसमें जो टाइम ये कैसे पता चलेगा कि इस किस टाइम आउट नोटिफिकेशन नोड को ट्रिगर करना है, मतलब तो टाइम वी नीड टू एक्स मतलब बेसिकली हम लोग को टाइम आउट कंट्रोल नोड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आउट नोटिफिकेशन नोड को ट्रिगर करना है, राइट? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यूनिक आइडेंटिफायर जो है टाइम आउट कंट्रोल नोड एंड टाइम आउट नोटिफिकेशन दोनों को एक सेम देना होगा। लेट मी तब यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखते हैं लाइक दैट कि टाइम एनीथिंग लाइक दैट टाइम आउट एनीथिंग राइट कंट्रोल or anything you can write XYZ PQR something anything. Okay. Now
Similar thing you have to write here. Anything you can identify, you can write here. Now, if you here, I have written here the unique identifier timeout control, and here I have written unique identifier as a timeout control. Now, what is happening? If you see here, basically, once this flow will be triggered, this will come to here, and this will control the timing, and there is a timing fix at there. After that, at that timing, basically this flow will trigger, and whatever the operation perform, it will perform here and will go to the output. Let me show you how can we decide the and what timing basically it need to be performed. How can we decide? I have initially set the 20 second. In 20 second, my flow need to be triggered. Let it be triggered. Let's wait for 20 seconds. I build based file. Now it's you can see. Now let me deploy the application. I think it was not deployed. It was taking previous timing. Let me deploy it. Things error. What is not deployed? Let me show. Now it's something pro triggered. You see here in the local environment. Okay, there is the option. If you see in the local environment, there is a timeout request. Under timeout request, there is the option of the action identifier and now, if you see here, there is a something defined. Okay, the flow will be triggered at which time and which date and which time and how many time it will be triggered. It will be triggered one time and what is the interval of trigger? That is this is the interval of trigger and there is a option like ignore miss and to these all the option basically it is already defined in the local environment tree. Okay, basically what I am going to do. I am going to just let me show you. I am just going to manually set the value of this and this timing and how many time it need to be and then interval of each second. Okay, basically this time basically we are going to I am going to set in manually in the let me cancel the flow. Now let me now I am going to manually basically change into the this compute node. Basically I am going to change the value. Basically I am going to set some value. This value basically I am going to set this timing that and this date and this timing and how many time it to be trigger and what should be the timing interval of the trigger and instead of taking automatic from the here. Okay, so we are manually setting this. Okay, and we will set into the local environment tree. Okay, do you know if you want to set something into local environment tree, then you need to select local environment tree and message from here. You want to select something in local environment tree, then you have to select local environment tree and message from here. Okay, now after that let me clear this because I'm not going to use this here. I'm going to use here. Let me add this here. I'm going to set value here and print it out. Now let me write some code here. I'm going to just set in the local environment with let's set output local environment dot under that I'm going to set under under that I'm going to set in timeout request under that I'm going to set the option of action and I'm going to use the action is set. I'm going to use set. Basically similarly for the other lines I'm going to use. Okay, let me copy this and later change. I will change it. Okay. Let me just
इट्स ओके। नाउ लेट मी अगेन फटाफट चेंज कर देते हैं। आइडेंटिफायर in date, start time, then count, then server, then ignore miss, then last one left. Let me copy one more time. So that I am going to set the value. Okay. Now it's done. Okay. Now let's set the value against each. Basically, I am setting the value in the output local environment. Basically, this is the local environment. Under local environment, there is a timeout request. Under timeout request, there is a these values, and this value decides the this value basically decides at which time the flow needs to be. This basically decides. This basically at which date time need to trigger. This which timing to trigger, and how many time it need to trigger, and what is the time and what is the interval at which this need to be triggered. Okay, let me see set this all. Okay, basically it's here you basically you are setting the value, the unit right here set any identifier, anything you can write like that. Let me write it here something like that. Timer control, anything, right? Anything you can. Okay, something unique identifier you have to write. Okay, now here you have to write start it. This flow into if you are writing something like that, 2023 and 08 and wasn't and the date is 17, then this will not be okay. Basically this we are manually writing the date, and what we are expecting, हम लोग expect कर रहे हैं कि this flow जो है daily इस टाइमिंग में ट्रिगर हो। ओके, तो दिस इज नॉट गुड वे टू राइट। अगर एक तरीका लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर टुडे। Basically it will basically if you go to the flow will be again trigger and tomorrow, then it will be today for tomorrow। okay, then again तो परसों ट्रिगर होगा तो उस दिन भी वो जैसे ही ट्रिगर तो उसके लिए उस दिन 18 तारीख ले लेगा। फिर टुडे मतलब आज का डेट, आज ट्रिगर हुआ तो आज का डेट ले रहा है, कल ट्रिगर हुआ तो कल का डेट होगा, परसों ट्रिगर हुआ तो परसों डेट होगा, छोटा ट्रिगर छोटा ट्रिगर होगा। तो इस तरह से जो है ये ट्रिगर करते रहेगा। टाइमिंग किस टाइमिंग को ट्रिगर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम ट्रिगर करना चाहते हैं 12 बजे। ओके, हम 12:00 लेते हैं। तो टाइमिंग का जो फॉर्मेट होता है हम लोग फॉलो करते हैं बेसिकली जो है आवर, मंथ, आवर, मिनट एंड सेकंड। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर आवर, मिनट, सेकंड 12 बजे, 12 बजे ठीक। ओके, तो यहाँ पर हम कितना बार ट्रिगर करना चाहते हैं, तो लेट्स से हम वो एक बार ही ट्रिगर करना चाहते हैं। जस्ट आई वांट टू ट्रिगर वन टाइम इन द 12 बजे। 12 बजे हम चाहते हैं सिर्फ फ्लो जो मेरा एक बार ट्रिगर हो। ओके, इंटरवल कितना होगा, तो हम मान लो कि 20 सेकंड के अंदर में 20 सेकंड के अंदर में एक बार ट्रिगर होगा। अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो यहाँ पर 20 सेकंड्स के अंदर में ही 3 बार ट्रिगर होगा। ओके, यहाँ 5 लिखते हैं 20 सेकंड में 5 बार ट्रिगर होगा। तो हम जब एक बार लिखते हैं तो एक बार 20 सेकंड के अंदर में ट्रिगर होने वाला है। ओके, इग्नोर मिस के मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल की अगर हम इस 12 बजे के आसपास किसी ने क्या किया, एग्जीक्यूशन ग्रुप क्या हुआ, रीस्टार्ट मार दिया। ठीक है? तो उस समय क्या होगा, वो तो फ्लो ट्रिगर नहीं हो पाया। तो इस केस में क्या होता है, अगर यहाँ पर तुम ट्रू लिख देते हो देन क्या होता है, ये जो है अब उस दिन फ्लो जो है मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आज फ्लो जो है वो अगर कोई एक्शन ग्रुप रिस्टार्ट मार दिया तो आज फ्लो ट्रिगर नहीं होने वाला है। ये फ्लो जो है अब कल ट्रिगर होगा। तो मतलब वो फ्लो जो है मिस कर गया, मतलब आज का जो है वो ट्रिगर जो होने वाला था वो मिस कर गया। अगर हम यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं, फॉल्स, अगर हम फॉल्स लिख देते हैं इसका मतलब क्या होगा कि इग्नोर मिस मतलब कि इग्नोर हो, मतलब अगर इनकेस कोई रिस्टार्ट मारता है तो क्या इग्नोर करेगा, नहीं करेगा। एज़ सून एज़ जैसे भी मतलब हमारा एग्जीक्यूशन ग्रुप अप होगा, ये टाइम जो है ये फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो इग्नोर मिस का मतलब होता है इग्नोर मिस होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये इग्नोर होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो इग्नोर मिस फॉल्स मतलब कि एज़ सून एज़ माय फ्लो विल बी अप, देन हिट द फ्लो। ओके,
अलाउ ओवरराइट इन केस मान लो कि फाइल जो है मतलब ओवरराइट करना चाहते हो मतलब लाइक दैट कोई फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है और कोई अगेन सेम फाइल कीप कीप कर देता है तो उसको ओवरराइट करना है तो यस ट्रू। देन उसको से लाइक दैट कि मेरा फाइल समहाउ प्लेस ढंग से नहीं हुआ देन हम चाहे तो उसको ओवरराइट कर सकते हैं। ओके, देन ये मेरा सिंपल सा कंसेप्ट रहा। ये हमने सारा डिटेल्स को सेट कर दिए हैं इन द is this compute node. Okay, basically this flow will be triggered in the interval of daily at 24 hour. So what is 24 hour? I think it was 86400. Okay, so this is basically 24 hour. This flow will be triggered in the interval of 24 hour. Okay, as soon as this will come here, it sets the value that this flow needs to be triggered today. इफ इट इज टुमारो देन अगर बात करते हैं 18 तारीख को तो 18 तारीख को टुडे हो जाएगा, 18 डेट हो जाएगा और टाइमिंग फिक्स कर दिए हैं कि 12 बजे। तो ये फॉलो ना करके ये फ्लो नहीं होगा, जो कि ये खाली ये फ्लो नहीं होगा, ये जस्ट ये जो है फॉलो होगा कि 12 बजे फ्लो हो, यहाँ पे 11 अकाउंट हो रहा है, 12 बजे ये ट्रिगर होने वाला है। ओके, काउंटिंग जो है एक बार ही ट्रिगर होगा, 20 सेकंड के अंदर में ट्रिगर होगा। उसका से जो है इग्नोर होता है, इग्नोर अगर मान इन केस कुछ कोई रिस्टार्ट मार देता है तो इग्नोर होगा क्या? नहीं, इग्नोर नहीं होगा। फिर अगेन जो है कुछ टाइम सेकंड बाद वो जैसे ही अप होगा एग्जीक्यूशन ग्रुप ये विल तो जो है ट्रिगर होगा, ओवरराइट होगा, हाँ ओवरराइट होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया सिंपल सा कंसेप्ट। तो यहाँ पर उसका हमने यहाँ पर टाइम आउट कंट्रोल नोड में अगर तुम देखो तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लोकेशन है जो कि आपको मेंशन करना पड़ता है। रिक्वेस्ट लोकेशन क्या है कि तुमको जो है कहाँ पर बेसिकली ये रिक्वेस्ट करना चाहते हो। लाइक दैट यहाँ पर हम इसको लिखते हैं बेसिकली इनपुट लोकल एनवायरनमेंट इनपुट सॉरी राइट हियर इनपुट लोकल एनवायरनमेंट एंड we go here input local environment and under that dot timeout request. Basically, what I am writing, I am just writing this thing. If you, I think this was thing missed. It was like this. It was like this local environment at a timeout request, and there is something like that. Okay, so basically, what I am requesting information from here. I am requesting information from input local environment and timeout request. From here, I am requesting information, and that is local environment, and this is all about. Okay, basically, this you need to change this in here. After that, basically, we are controlling the timeouts. You have from here you have to select. Basically, if you see initially here timing showing that how many seconds after that flow we need to be triggered. But we are basically controlling this. We are controlling this from here. Okay, so that I need to select the controlled. Now this is controlling. But here you can see here it is showing cross. Why it is showing cross? Any idea? Because here we are selecting some value from database and I have not given here database name. Let me data source name. Let me write here data source name IIB node is my data source name. Huh? Error has been gone. I think my flow has been completed. I just let me go through. I just created timeout notification node. Here it's okay. If this flow need to be triggered, then it's okay. Now compute node looking good. I have set the value. Okay. Now control node. If you see value I've set it. Now if I see here, I've selected the controlled. I see here. I'm just sending the value and same thing. I'm just getting here. Okay. Seems to be looking good. Let me build and save the bar file. Okay. Now it's looking bar file. We did this application. Now I'm going to deploy this application. Before that, let me my I have just basically setted the timing as 12 and it is currently 11:55. Okay, let's wait for
Uh, Let me explain the flow for few minutes, and after that, I am going to deploy the application. See how it's working at the basically at the 12 p.m. Okay? बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टाइम आउट नोटिफिकेशन नोट दिया। बेसिकली टाइम आउट नोटिफिकेशन नोट क्या करता है, इस फ्लो को 24 आवर में एक बार ट्रिगर करेगा। बट अगेन जैसे ही फ्लो को हम डिप्लॉय करेंगे एक बार फिर से ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। जैसे फ्लो को डिप्लॉय करेंगे एक बार जो है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इनिशियली वंस यू डिप्लॉय द फ्लो इट विल ट्रिगर वंस टाइम ऑटोमेटिकली। ओके, जैसे ही ट्रिगर होगा तो उसका से क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, लोकल एनवायरनमेंट के अंदर में वैल्यू जो है ये सेट कर देंगे। और जो है तो कब ट्रिगर होना है, कितना बार ट्रिगर होना है, क्या इसका इंटरवल रहने वाला है, 1 2 बार मिस होने वाला है कि नहीं, ओवरराइट होने वाला है, सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर हमने सेट कर दिए हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन जो है कब फ्लो ट्रिगर होना है, क्या फ्लो ट्रिगर होना है, इसके मेमोरी में जो है टाइम आउट कंट्रोल की मेमोरी में कैप्चर होने वाला है। ओके, टाइम आउट कंट्रोल का हमने ऑलरेडी दे चुके हैं टाइम आउट कंट्रोल के अंदर में कि हम लोग जो है क्या उसका आइडेंटिफायर रहने वाला है टाइम आउट कंट्रोल। ओके, और इसके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ये चीज़, तो ये भी हम लिख दिए कि इनपुट लोकल इन्वायरमेंट और टाइम आउट रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ओके, नाउ जैसे ये क्या करेगा, वैसे ये जो टाइमिंग इसके अंदर में फिक्स हो चुका है कि ये फ्लो जो है मेरे पास जो है ये 12 बजे ही ट्रिगर करना है, ये फिक्स हो चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल जो है बेसिकली ये क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। जैसे ही 12 बजेगा इस फ्लो को ट्रिगर करेगा और ये जो फिर डेटाबेस से प्रोसेस होगा, फिर ये यहाँ पर इंसर्ट होगा, गेट द डिटेल्स इन द टेबल। लेट मी डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन, फटाफट क्या करते हैं, लॉन्च द डिबगर फॉर डिप्लॉइंग, बस डिप्लॉय दिस। कुछ इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, व्हाइल टेम्पटिंग invalid configuration containing the attribute about control. I think it is taking not wrong. Okay, let me change it something. I think this is not taking correctly. Let me write it something like that. T time out control. Okay, or timeout m one. Let me write something like that. Let's see if it's working or not. Maybe this that format it is not taking. Let me again build and save the bar file. Now let's deploy it. This same what is happening. Now it's deployed. Now you can see the flow has been automatically triggered because initially we have deployed the application, and once the application is deployed, the flow will be automatically triggered. Okay. See here, now it's gone. Let's go inside the computer. We go inside the computer. Initially, if you see here in the local environment tree, the value of the request is current timing that 11:58. Okay. Now you can see that timing. 11:58 is the data timing basically current inside. Now we are setting this, changing this value in from the output local environment. You see here, just you see here, I have just set it the value into the output local environment on the request, that is the timer control today at the 12 p.m. Basically, this flow need to be trigger, and you can see that's the all the time interval. Let me go outside. Now, if you see, it's waiting for the 12. As soon as 12 will be happen, this flow will going to be triggered. Let me at the breakpoint basically. Okay. Now, as soon as 12 will happen, this flow is going to be triggered and it is going to be insert the press. Okay. Let's wait for the 12. Okay. In few seconds, it is going to be now. See, now it's 12 timing is happened. This flow has been triggered. See, and this flow triggered that and will basically do a insert. Going to do, and this will basically not insert upon. This will basically selecting from table and giving to the output. Let me see. Initially in the this queue there is no message. This dot out queue there is no message. Okay. Now let me, now you can see we are going to get that, we are going to get the details from the table this queue.
Now you have seen how it's working. Okay. Now let me change the timing and show you one more time. And we will let me change the timing to the 11 to हम चाहते हैं 12 बज के डेली बजे 12 बज के 2 मिनट पे फ्लो एंड 30 सेकंड 12 बज के 2 एंड 30 सेकंड पर ये फ्लो डेली जो है ट्रिगर होना चाहिए। ओके। अब उसके लिए हम क्या करना होगा लेट्स मी अगेन लीवर लॉन्च है लेट मी अगेन ट्राई द फ्लो ताकि हम तुरंत ट्रिगर करना चाहते हैं इसलिए हम डिप्लॉय मारते हैं इसको। बट बिफोर दैट बिल्ड एंड सेव करना ज़रूरी था। ठीक है, बिल्ड एंड सेव करना बहुत ज़रूरी था। मी क्लियर दिस। मैं पहले फर्स्ट बिल्ड एंड सेव का बिल्ड एंड सेव इज लेट मी डिप्लॉय लॉन्च लेट मी डिप्लॉय इट 12 2 ऑलरेडी हो चुका है 30 सेकंड मत कब हो जाएगा भरोसा नहीं। नाउ कैन सी इट्स डन it's done. Now it's waiting for the 12:30 second. But now wait 30 second I think it's not done. As soon as 12 बज के सेकंड होगा ये जो फ्लो ट्रिगर्ड हो। लेट्स वेट फॉर आई मीन माइट बी द 30 सेकंड हुआ जो है ट्रिगर्ड हुआ और ये फ्लोस फिर अगेन ये गोइंग टू इंसर्ट यू आर गोइंग टू गेट आउटपुट now is the latest message see same message in the output। तो ये जो है मेरा टाइम आउट कंट्रोल हमने टाइम आउट को कंट्रोल कर सकते हैं कितना बजे हमको उसको ट्रिगर करना है दिस इज बेसिकली टाइम आउट कंट्रोल नोड। ओके। तो हमने देखा बेसिकली कि कैसे हम लोग टाइम आउट को कंट्रोल कर सकते हैं सिंपल जो है टाइम आउट नोटिफिकेशन नोड में हम लोग बेसिकली ये ट्रिगर्ड होगा उसके अंदर में यहाँ पर लोकल इन्वायरमेंट के अंदर में इन्फॉर्मेशन को हम सेट करेंगे कि किस टाइम में इसको ट्रिगर करना है उसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर टाइम आउट कंट्रोल ये कंट्रोल करने वाला है कि टाइम आउट कंट्रोल बेसिकली कंट्रोल द टाइम आउट नोटिफिकेशन नोड when to be hit this flow, okay, and as soon as this flow will be hitted at fixed timing this is going to be basically do some operation whatever is uh, done in the coding here and we are going to same get in something in output। तो ये सिंपल सा तुम्हारा जो है फ्लो है बेसिकली टाइम आउट का। ओके। तो हो वीडियो अच्छा लगा तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू साइन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ सी यू अगेन टाटा बाय बाय।